को. Hello everyone. Welcome back. Good evening. Hasta la vista. आज Friday है. I hope you all are enjoying and everyone is good at your home. You guys are enjoying at your home. So yes, as promised, it's Friday today and we have got some new content for you. I hope you enjoyed the first and second day of my class. And if there are any doubts, as I told you that please comment me. So though I have received a few questions wherein I have responded, but I would be happy to know if you have learned it or not, or if you are using it in your day-to-day life or not. Anyways, let us start. So to begin with, you can see the word on my screen, word of the day, right? As we agreed that every day हम एक नया word सीखेंगे. So to start with, this time I thought we will start with the new word. Last two classes में मैंने वो word बीच में बताया था in the middle and in the last of the, in first class I told you at the last of the class. In the second one I told you in the middle of the one. But I thought to start with, just to give a ice break, I will start with the beginning of the class. So word of the day is inquisitive, right? Now what is inquisitive? You know what is inquisitive? So first we will pronounce it inquisitive. Okay, let's say inquisitive. So guys, inquisitive का मतलब होता है curious. When you know, you wanted to know something curiously, कुछ जानने, जिज्ञासु जिसे बोलते हैं, right? मुझे ये, for example, I'll give you a recent example, not recent, ongoing example. Let's say these days web series are getting too famous, right? जब कोई first part आता है किसी web series का, and then the way they end it, we, you know, are inclined to watch the second part. हमें लगता है यार second part भी इसका देखना होगा, क्या interest होगा. We are inquisitive on that time, right? We are curious to know what will happen next. आगे क्या होगा. These days movies are also, producers are making ऐसे movie बनाते हैं कि first आए then second के लिए लोगों को interest रहे. So when we wanted to know something curiously, किसी चीज की जिज्ञासा होती है, उसको हम बोलते हैं inquisitive, right? I am inquisitive to know about this movie. I am inquisitive to know about this thing, right? So inquisitive. Please use this word in your day-to-day life. Make sure that you make at least 5 words with this word called inquisitive. Okay. So just to recap, I will not recap each and everything. I will just recap in our first class. If you remember, the word of the day was, anyone who can comment me also that if you remember what was the word of the day in our first class. It was it in our second class, it was impeccable, right? It was impeccable. So you can refer to my videos and you can certainly check what was the first. This will be, I'll keep this suspense. Okay, anyways, moving forward, as promised in my yesterday class that we will learn email writing skills. So this session is dedicated to those people, those who want to learn, who want to know how to write an effective email, right? I hope email writing is a essential thing in our day-to-day life, right? So I'll show you the page. So as you see, email writing tips and question. So there are certain tips which I'm going to give you today, which will help you formulate your emails in a very, very effective manner, right? Also, there are certain cautions which I'll tell you, do's and don'ts basically. आपको क्या follow करना है, क्या नहीं follow करना, कहाँ ध्यान देना है, क्या नहीं ध्यान देना. Friends, I would also like to tell you, some of us think email writing is a very easy task, right? Speaking is very tough task. But believe you me, when you actually write an email, आपके दिमाग में words ही नहीं आते कि क्या लिखूं, right? Then we Google search कि क्या लिखूं. Also, that is a different thing. But हमारी एक email का एक लहजा होता है basically, right? एक pattern होता है कि कहाँ से start करना है, कैसे खत्म करना है. Effective emails, जो अगर कोई आपकी ईमेल है बहुत इफेक्टिव है, वो पढ़ी जाती है, राइट? एंड देन फॉर एग्जांपल यू आर सेंडिंग एन ईमेल टू अ स्ट्रेंजर जिसको आप जानते नहीं हो, कोई कंप्लेंट कर रहे हो, कोई फीडबैक दे रहे हो या कुछ भी, आपकी ईमेल से आपकी पर्सनालिटी का पता चलता है. फॉर एग्जांपल मेरे को किसी से मेल आया और वो मेल बहुत ही
बेकार तरीके से लिखा हुआ था, दैट वाज द पर्सन डिड नॉट फॉलो द बेसिक रूल्स ऑफ एन ईमेल, सो मेरी नजर में वो ही फर्स्ट इंप्रेशन हो जाएगा कि उस बंदे को कुछ नहीं आता. Similar to that, if I get an email which is very effectively written, right? So मेरे लिए उस बंदे का impression होगा कि yes, the person is very educated, he knows how to write emails. So when you write effective emails, you get the replies also. कई बार हम ईमेल्स लिखते हैं, वी डू नॉट गेट रिप्लाईज, हम फॉलो अप करते रहते हैं उन पे, ईमेल्स चेजर्स डालते रहते हैं, प्लीज रिस्पॉन्स, दे डू नॉट, बिकॉज द वन रीजन इज, द बेसिक रीजन इज दैट the mails are not effective. Mails are not effective doesn't mean that आपने सही से नहीं लिखा. बहुत सारी चीजें होती है. क्या आपका सब्जेक्ट कैची था, जो रिस्पोंडेंट जिसको आप मेल भेज रहे हो उसको मजबूर कर दे पढ़ने के लिए कि yes I need to reply to this email. So I will tell you basic things. These are very easy tips. कोई rocket science नहीं है. If you follow these techniques, I am sure you can write a very very effective email. Not only email, anything which any letter writing or any complaint you want to make to any department, कोई escalation करना है आपको, या कोई थैंक यू नोट भेजना है, या कोई एप्रिसिएशन नोट भेजना है, या कोई एक नॉर्मल नोट भी भेजना है via email, right? My personal or professional email, this will going to help you. So in the interest of time, let us start. So the first thing, if you'll see on my screen, I have written proofread and spell check, right? Proofread and spell check. So now what is proofread and spell check? So whenever we write the emails, so make sure, very, very important, I'm saying, after writing an email, जब आपकी एक email खत्म हो जाए, जब आप लिख लो उसको, do not click on send button immediately. Do not do so. ये नहीं कि बस मुझे मेल लिख दिया, भले ही आपको पता है कि आपने मेल सही लिखा है, you are checking it, but I can vouch on that out of 100, 99% people will find errors if they proofread their emails. मैंने अपनी कोई email draft की, before I click on send, I need to proofread basically. Proofread in the sense, मुझे एक बार उसको reiterate करना है कि did I miss any word or anything, any pronunciation या कोई message कुछ भी is MR helping वो कुछ miss तो नहीं किया, या spelling, very important spelling also. I can vouch on that. आपको अब अगर आपने प्रूफ रीड करना स्टार्ट किया ईमेल्स को, या आप ये अपने नॉलेज चेक कर सकते हो, आप एक ईमेल ड्राफ्ट करो और उसको एक बार आप पढ़ो, तो यू विल फाइंड एरर्स, राइट? जैसे हम दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, ऐसे ही हम जब मेल लिखेंगे और अपनी ही गलती इसमें समझ आ जाएगी आपको. सो प्रूफ रीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रूफ रीड से आपको ये हेल्प मिलता है कि आपको जब आपने सेंड का बटन दबा दिया, आफ्टरवर्ड्स यू रियलाइज, ओ शिट, मैंने ये गलत लिख दिया, या फिर ये तो मैंने लिखा ही नहीं, फिर उसको आप रिकॉल करते हैं. सो एक ऑप्शन होता है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, आपने गलती से कोई ईमेल भेज दिया है, राइट? तब एक ऑप्शन होता है जिसको आप अपनी मेल को रिकॉल कर सकते हो. रिकॉल का मतलब ये होता है कि अगर सेंडर ने उस मेल को तब तक नहीं देखा तो, और फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई ईमेल भेजा अपने किसी फ्रेंड को, गलती से मैंने कुछ जो मैंने मैसेज देना था वो नहीं लिखा मैसेज, एंड मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया, देन आई रियलाइज, ओ शिट, मैंने तो मेल गलत भेज दिया, गलत उसमें वो था. देन क्विकली आई गो टू एक्शंस. एक ऑप्शन होता है एक्शंस आउटलुक में. एक्शंस में जाके आप रिकॉल बटन दबाओ. रिकॉल, अगर जितना टाइम है, अगर मेरे फ्रेंड ने उसको नहीं पढ़ा और मैंने रिकॉल कर दिया, तो वो मेल रिकॉल हो जाएगा, तो उसके पास वो मेल नहीं जाएगा. एंड that means until and unless that person is not able to read it, so that mail will be recalled. लेकिन उस time duration में अगर उसने पढ़ लिया तो वो recall नहीं होगा. So instead of missing on these aspects, instead of thinking कि मैं recall कर दूंगा, better do a proofread. After you are done with your email, just give 2 minutes. Do not click on send. Have some patience. एक बार उसको read out कर दो. आपको बहुत सारी mistakes मिलेंगी, believe you me. क्योंकि जब हम टाइप करते हैं, जब हम लिखते हैं, तब हम मिस्टेक्स नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बट जब आप ध्यान से उसको कंसंट्रेशन से एक बार पढ़ोगे, यू विल गेट इट. सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, वेरी बेसिक पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज स्पेल चेक. नाउ स्पेल चेक, व्हाट इज स्पेल चेक? हमारे एमएस वर्ड में भी एक ऑप्शन होता है F7 से, वी गो टू दैट कमांड एंड वी डू अ स्पेलिंग चेक. सो ईमेल राइटिंग में भी स्पेल चेक का ऑप्शन होता है, आप चाहो वहां पर स्पेल चेक करो. स्पेल चेक विल लेट यू नो कि जो स्पेलिंग आपने किसी वर्ड की लिखी है, इज इट करेक्ट और नॉट. एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कुछ स्पेलिंग्स इनबिल्ट होती हैं
कंप्यूटर मेमोरी में. सो यू नीड टू चेक. फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट क्लास में भी कुछ पढ़ा था कि कुछ स्पेलिंग्स अमेरिकन है, कुछ यूके इंग्लिश है. आपने लिखा बिहेवियर, so BEHAVIOR, computer will accept, but you want to write BEHAVIOUR, so वो आपको शायद एरर दे दे. बट उस पे एक ऑप्शन होता है इग्नोर ऑल और एक्सेप्ट माई स्पेलिंग. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डू ए स्पेल चेक. हर किसी वर्ड की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, बिकॉज इनकरेक्ट स्पेलिंग्स डजंट क्रिएट ए गुड इंप्रेशन, राइट? सो दैट वाज द टिप नंबर 1. Read your emails and do a spell check. Okay, so now next part, which is very, very important, as you see on my screen, difference in to and CC. I hope you all are aware when we write emails. So to मतलब जिसको हम मेल भेजते हैं, right? उसको email address लिखते हैं, like for example Ishant Kumar 123@yahoo.co.in. Any email ID? This is my email ID, for example, right? कोई भी हम मेल लिखते हैं, to में लिखते हैं. Now you would be knowing it. Some of you would be knowing it. What is the option we use for CC? CC means carbon copy, right? Also, there is one more option. If you have noticed, BCC, backup carbon copy. I'll tell you that also. What is BCC? So first and foremost, 2 का use कब होता है, CC का use कब होता है, BCC का use कब होता है? I'll tell you in detail. So make sure. Let's say, for example, मुझे एक email लिखना है. Let's say I work in a school. Let's say I work in a school. I'm as a teacher. मैं English teacher हूँ किसी स्कूल में. Let's say कोई भी एक स्कूल है, and उस स्कूल के जो हेड ऑफ टीचर है, I mean हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जो टीचर है या ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है, I report to her, right? And I need to take a leave, या मुझे उनको कोई मैसेज देना है, कोई लीव करना है, कुछ भी. So I'll keep her in 2, right? That this is I'll keep that person, either lady or the guy, in 2. जिसको मैसेज देना है, जिसके लिए मैं मेल लिख रहा हूँ, that person will be part in 2 में आएगा वो बंदा या जो भी है. CC means, CC का मतलब ये होता है कि that message is not for that person, but you are keeping that person for information only, right? आप CC में स्कूल के प्रिंसिपल को रख सकते हो, बिकॉज स्कूल के प्रिंसिपल को पता होना चाहिए कि यू आर ऑन लीव. बट मैसेज प्रिंसिपल के लिए नहीं है. आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर से, राइट, टीचिंग कोऑर्डिनेटर से, बट मैसेज प्रिंसिपल के लिए नहीं. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. यू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, and you are requesting for a leave from your supervisor, right? So you will keep that person in 2, right? Your supervisor, organizations में एक hierarchy होती है, supervisor, then manager, then general managers, then president, right? You can keep your supervisor in 2, that मुझे एक छुट्टी चाहिए, उसकी आप email लिख रहे हैं, I need a leave because of this reason. Also you can keep your manager in CC, right? So that your manager is aware that yes, that person is leave. CC का मतलब होता है for information, उस बंदे की जानकारी के लिए, that's it. But that mail is not intended to that person. उस बंदे के लिए वो मेल नहीं है, जवाब उसकी कोई जवाबदेही नहीं है basically, right? He will not respond to you. You are asking for a response from the person who is in 2. So make sure आप उसी बंदे को 2 में रखो, उसी person को 2 में रखो जिससे आप response expect कर रहे हो. आप जिससे रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, डू नॉट कीप दैट पर्सन इन 2, कीप दैट पर्सन इन CC. CC मीन्स जस्ट फॉर हिज इंफॉर्मेशन ओनली, हिज और हर इंफॉर्मेशन ओनली. उस पर्सन की जानकारी के लिए है ये ईमेल. उस पर्सन से वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई. जिससे हम रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट पर्सन शुड बी इन 2, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, to keep that person. What we do in our day to day life, हम सबको 2 में रख देते हैं, राइट? सबको 2 में मतलब का ये होता है कि हम सबसे रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो 2 में सिर्फ उन्हीं को रखा जाता है जिनसे हम रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जिनको हम एक्चुअली डायरेक्ट मैसेज देना चाहते हैं. कहीं जरूरी नहीं कि हर ईमेल का एक रिस्पॉन्स होता है. कई बार वी राइट एन ईमेल जस्ट टू गिव ए मैसेज. सो द मैसेज जिसके लिए मैसेज है, मे बी कोई एप्रिसिएशन देना चाहते हो, कोई फीडबैक देना चाहते हो, किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, सो आप उसको 2 में रखोगे, दैट यू हैव डन ए मार्वेलस जॉब, बहुत अच्छा काम किया है. दैट पर्सन विल बी इन 2. आप उसके बॉस को CC में रखो, उसके बॉस को CC में, कि उसके बॉस को पता होना चाहिए कि दैट पर्सन हैज डन ए ग्रेट वर्क, राइट? सो दैट वाज 2 and CC.
Now next is BCC. So BCC का use very very minimal होता है, बहुत rare to rare. I don't think so कोई BCC का use करता भी है in organization or anywhere. However, BCC का use, I tell you one thing, बैकअप कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है यू वांट टू कीप सम पर्सन इन बीसीसी. बीसीसी से ये होता है जब हम किसी को बीसीसी में रखते हैं, दैट पर्सन नोज इट कि ही इज मार्क्ड ऑन द ईमेल, बट जो पर्सन 2 और सीसी में है उनको पता नहीं होता कि बीसीसी में किसी को रखा हुआ है. दैट्स ए यू कैन से ब्लैंक कार्बन कॉपी और बैकअप कार्बन कॉपी, राइट. वो दिखता नहीं है. लेट्स से मैंने एक ईमेल मार्क किया, 2 में रखा ए को, सीसी में रखा बी को और बीसीसी में रखा सी को. So C is aware कि ये मेल गया है 2 and B को, but 2 A और B को नहीं पता होगा कि BCC में कि C को भी ये मेल गया है. So जब आप किसी को मेल में रखना चाहते हो और आपको लगता है कि किसी को पता ना चले तो वो BCC में आप रख सकते हो, but it is used very minimal. I hope I'm making sense and it is clear to you, right? Still, if there are any questions, anything you want to know कि 2 and CC में कोई confusion है, let me know via comments. So 2 and CC, the next step was to whom we should keep in 2 and who should be in CC. Coming to the next part of our email writing skill, very very important. So you can see on the screen that I have written hi, dear and hello. So as we know, as we are discussing this from our first class, formal, informal, ये हर class में चलेगा formal, informal, right? This is like this is part of English language. So हम अपना ईमेल स्टार्ट कैसे करें? हाय से करें, हेलो से करें, डियर से करें, कैसे करना चाहिए हमें ईमेल स्टार्ट? हमने 2 और सीसी समझ लिया कि किसको 2 में रखना है, किसको सीसी में रखना है. अब स्टार्ट कैसे करें? किसको क्या लिखे मेल पे, कैसे स्टार्ट करें? राइट, फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द बिगनिंग. So you can write when you are writing a formal email. So formal, informal पे फिर आ गए हम. What is formal, what is informal? जिन्होंने first and second class देखा है, they will be aware of what is formal, what is not, and what is informal. But I'll give a gist of it. Formal means when you are writing a formal email, for example, you are complaining for anything like आपका electricity bill बहुत ज़्यादा आ गया. You're writing to electricity department. You're writing to your bank. That's a formal email. You're banking to any government department, that's a formal email. Your college, your school, or to your boss, to your organization, जहाँ पर formal environment होता है, that therein we use the formal language. Informal कहाँ होता है? मैं अपने किसी friend को email लिख रहा हूँ, that would be an informal, right? Cousin को email लिख रहा हूँ, मेरे sister की शादी है, मैं invite कर रहा हूँ अपने friends को और अपने cousins को. Cousins will be already invited. So if I'm inviting someone who is very close to me or who is my friend, that will be an informal one. My neighbors, society, that informal one. So formal and informal, that's a basic difference. So when we write formal email, so we call it either with the last name, like for example, my name is Ishant Chhabra. So hi, Mr. Chhabra, or hi, or या तो last name के साथ make sure जब आप last name use कर रहे हो तो Mr. या Mrs. लगाओ, right? We need to call last name with Mr. and Mrs. Right. Herein you can write hi Ishant. So simple है ना ज़्यादा complicated है. Simply you can write hi Ishant. Or if you know the person जिसको आप मेल लिख रहे हो. कई बार ऐसे इंस्टेंस होता है हमें पता ही नहीं होता हम किसको लिख रहे हैं. बिकॉज फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आ गया है या फिर आपका वाटर बिल बहुत आ गया और आप एमसीडी को एक ईमेल लिख रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लिख रहे हो बीएससी की ईमेल आईडी पे. आपको पता नहीं है कि ये मेल किसको पहुंचेगा. तो उस केस में आप क्या लिखोगे? हाई टीम, राइट? हाई टीम, बिकॉज whosoever will respond to that person, उसके बाद आप उसका नाम ले सकते हो बट आपको नहीं पता ये मेल कौन रिसीव कर रहा है, राइट? सो हाई टीम, राइट? इन दैट केस यू आर टारगेटिंग टू द एंटायर टीम. अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग टू योर स्कूल प्रिंसिपल, देन आप उनका नाम लिख सकते हो, राइट? ओके, इन दैट केस वन मोर थिंग, most of the in organizations I have seen, I'm talking about organizations, हमारी habit होती है sir लिखने की, hi sir, right? Which is incorrect. I know it may sound ridiculous, but yes, hi sir, hi ma'am, honestly ये correct नहीं है. We work in an organizations wherein we should approach people with their names, right? We should approach people with their name, but we have this cultures
since ages. And believe you me, ये culture foreign में नहीं होता है. Any you go to abroad, any any country, they don't call it sir or ma'am. Sir or ma'am is basically they use it for hospitality industries, right? You went to a restaurant, when they welcome you, they say hello sir, welcome ma'am. Only there. But in a organization जहाँ पर आप काम करते हो, आपका बॉस काम करता है, we don't call it sir ma'am, we call it by the name. And that's a professionalism. Honestly, it's called professionalism. So if you are using sir, ma'am on your emails, skip it. Use it with the name. You respect that person. I'm not saying कि उसके person की respect मत करो. Respect करो, but emails पे sir, ma'am लिखना doesn't look good, right? So that's the first thing. Second thing, as I was telling you, कुछ emails हम informal भी लिखते हैं, right? To our friends, families, right? For example, you're staying in abroad, you're writing a letter to your family, writing an email to your family. So you write, dear sister, dear brother, ये नाम अपने brother sisters का नाम भी लिख सकते हो. So वहाँ पर आप dear लिख सकते हो instead of I. Okay, that's second part. Third is hello. So hello is a like combination of both formal and informal. I tell you. Up basically hello is an informal. However, hello is an informal. On emails, I'm telling you. On emails, it's informal, but it we can use it once we have developed some relation with someone over the email. For example, I am in regular communication with a person in my office. Regular emails आते हैं मेरी, मैं उनको emails भेजता हूँ. They mail to me related to some work, right? Then I can use this word called hello, because it's not a direct informal. Hello is used when I know someone. In a formal environment, in a formal culture, in a formal environment, if I know someone, then I can use hello. But if I don't know anyone, I will use hi. But I know now because that person is in regular touch with me, we keep exchanging emails, then I will use hello, right? So I hope it's clear. Hi कहाँ use होता है, dear कहाँ use होता है, hello कहाँ use होता है, right? To be crisp. Okay, so moving next, as we know, while we draft our emails, जब हम अपनी email draft करते हैं, उसके कुछ basic rules होते हैं, regulations होती है. I'll not get into that, ये वो. कुछ चीजें हैं, कुछ tips हैं, which you need to follow. 5 or 6 points I have mentioned in my slide. Politeness, very very important. अगर आपकी email पे आप डंडे मार रहे हो, you're writing some abusive language or different language, that doesn't make a good email, or it's not a professionalism. Doesn't make a good person. So your mail should be very polite, right? Irrespective, कैसी भी mail लिख रहे हो, there should be some politeness in your email. Politeness states that you are certainly an educated person, right? I understand कुछ emails ऐसी होती हैं जिसमें आप अपना aggression vent out करते हो, you know, take out your anger, yeah, this is blah blah blah, this is not done. But उसका भी एक तरीका होता है. You should not start with that, right? You should. There are certain diplomatic texts which wherein you can certainly write. We call it sarcasm. आप sarcasm use कर सकते हो, right? But we should always start with politeness. I'll tell you what is sarcasm also, right? Politeness होनी चाहिए email में. That's very very important. Formalness. Now there are certain emails which we write informal also, but we should have a flavor of formalness in those also, right? Formalness is a sense of basically it creates a, that means the person is educated. Formalness email का एक part है basically, right? Next is clarity. Your mail should be very clarified, should be very very precise, very clarified. कभी भी कोई email आप 2 या 3 pages की मत लिखना. I mean not too lengthy, no. Like, and I have seen certain emails जो paragraph ही लिख देते हैं पूरा. Start किया सीधा regards पे खत्म होता है. No, it's not a paragraph writing. No, do not do so. So emails should be very precise. बहुत brief होना चाहिए. उसका message बहुत clear होना चाहिए. जो message आप दे रहे हो. First email के अंदर आप दुनिया भर की चीजें नहीं डाल दोगे. For example, मेरे को कोई complaint करना है किसी चीज का. I'm not happy with the services. I'm writing an email. I got a product, but that product is not functioning. So I'm writing an email to the concerned authorities, right? I've drafted an email. I'm expressing my angerness that I'm not happy with the product you have given to me. Please replace it.
that doesn't mean I will write each and everything कि मैंने ये product use किया, it happened. I will just express my unhappiness, right? That I'm not content, I'm not delighted. This product is waste. It's not useful. Blah blah blah. And then I'll wait for the reply. Then they will ask more clarity about it. Then I will write in brief. Brief का मतलब ये भी नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ लिख दोगे. सो देयर इज अ टेक्निक. क्लैरिटी का मतलब यहाँ पर है आप हमेशा अगर आपका ईमेल आपको पता है कि बहुत लेंदी है, which cannot be precise, when somebody asks you कि give me the details, more details, तब आपको एक चीज याद रखना, उसको पैराग्राफ की जगह आप उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर देना, right? So it's very very important when we write points. Maybe it's for the students also, those who are preparing for exams or those who appear for exams in near future. Make sure जब भी आप कोई भी चीज लिखो, it's a very useful tip. कोई भी आंसर आप किसी क्वेश्चन का देते हो, चाहे वो ईमेल हो चाहे वो कुछ भी हो, मेक श्योर दैट थिंग इज इन पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स. जब आप दो चीजें फॉलो करते हो ना, examiner, whosoever is checking the paper or whosoever is reading the email, that person will get impressed. So it should be in points. Bullet points कर दो, चाहे उसको point 1, point 2, point 3. एक लंबे पैराग्राफ से पॉइंट्स बहुत बेटर होता है, because in points you brief it, this that. It's very crispy. And if you are adding some examples, सोने पे सुहागा. Examples literally means that you know that particular thing very well. So if you have examples, make sure you show the examples also. So mail clarity होनी चाहिए, bullet points में matter होना चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ होने चाहिए. अगर पैराग्राफ लिख रहे हो, एक लंबा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट ये नहीं कि आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे मेल पे. ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट का यहाँ ये मतलब है आपकी टोन जो होनी चाहिए, दैट शुड बी रिक्वेस्ट टोन, राइट? इट शुड बी रिक्वेस्ट टोन, बेसिकली सिमिलर टू पोलाइट. हम्बल टोन होनी चाहिए ईमेल की टोन से पता चल जाता है, राइट? द वे वी स्पीक, जब हम किसी से बात करते हैं, वी गेट टू नो कि किस तरह की टोन है दूसरे पर्सन की, पोलाइट है, एंगर है, क्या है. सिमिलर टू दैट एक ईमेल देख के भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ईमेल की टोन पोलाइट है, हम्बल है, या फिर एंगरिश है, या डिफरेंट है. सो मेक श्योर इट शुड बी हम्बल. नाउ हाउ यू कैन मेक इट पोलाइट, कैसे कर सकते हो, हम्बल कैसे कर सकते हो? फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, do not write anything in bold letters. You know bold letters, capital letters. जब हम कोई मैसेज ईमेल्स पे लिखते हैं, do not write in bold letters. So bold letters means is basically you are disrespecting the person. You are basically not when you are in very anger, you are showing your expression of angerness. So bold में कुछ मत लिखो. It's a sign of disrespect. आप कोई भी चाहे मैसेज भी करते हो, maybe you are doing a WhatsApp message to your boss, to your informal environment. I'm telling you, informal में तो that's fine. Ideally informal में भी नहीं करना चाहिए. Formal में अगर आप कोई मैसेज कर रहे हो अपने बॉस को, वो भी कैपिटल लेटर्स में, it means that you are threatening to that person. You're not happy, right? So do not write anything in bold. That's very very important. It should be in running case. स्मॉल पे भी नहीं होना चाहिए. स्मॉल का मतलब होता है कि यू डोंट नो राइटिंग स्किल्स. रनिंग केस का मतलब होता है फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड रिमेनिंग इन स्मॉल लेटर्स. दैट्स कॉल्ड रनिंग केस. इट शुड बी इन रनिंग केस. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इट शुड नॉट बी अंडरलाइंड, राइट? अंडरलाइन नहीं होना चाहिए. यस, यू कैन सर्टेनली अंडरलाइन, हाईलाइट सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच यू वांट कि रिसीवर को इन पॉइंट्स पे फोकस होना चाहिए, बट ये नहीं कि आप पूरी लाइन अंडरलाइन कर दो, राइट? कुछ पॉइंट्स आप कर सकते हो, बट बोल्ड नहीं कर सकते हो, राइट? इटैलिक भी कर सकते हो, दैट्स फाइन. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी वर्ड को बोल्ड के साथ रेड नहीं करोगे. आई हैव सीन सर्टेन ईमेल्स, बोल्ड लेटर होता है और उसको वो पूरा उसका फॉन्ट रेड होता है. नो, that's not a good message. Red sign is a sign of danger. Also it means that your email writing skills are not good, right? So these are the few things which you're gonna keep in mind. नेक्स्ट आता है क्लोजिंग. क्लोजिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. क्लोजिंग का मतलब है जो आप मैसेज देना चाहते हो वही मैसेज होना चाहिए. मेरे को मेल लिखनी थी किसी कंप्लेंट की, बट मैंने लिख कुछ और दिया. मुझे मेल लिखनी थी किसी वेवर की, बट मैंने मेल लिख कुछ और दी. मुझे देना था फीडबैक अच्छा, दैट आई एम हैप्पी विद द कस्टमर, बट मैंने कर कुछ और दिया. सो योर बेसिकली जो आपका टारगेट है, जो आप कहना चाहते हो वही होना चाहिए मेल पे.
और डू नॉट राइट हिस्ट्री, यहाँ से ये सिंपल क्रिस्प, राइट. ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग ओवर हियर. आपका मेल में सब्जेक्ट लाइन होता है, सब्जेक्ट. दैट सब्जेक्ट is the only thing which basically trigger the recipient. जो रिसिपेंट को ट्रिगर करेगा कि ये मेल मुझे पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. सब्जेक्ट से, राइट. आप अपना ईमेल बॉक्स खोलो, जीमेल, याहू, सब्जेक्ट में आता है ना किस रिलेटेड है. अगर कोई टॉपिक लगता है हमें कि यार ये मेल हमें ओपन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे पता चलता है? दो चीजों से. वन इज हु इज सेंडिंग अस, सेकंड द सब्जेक्ट लाइन. Who is sending us? If we know the sender, हम उस मेल को पढ़ते हैं कि यार ये तो मेरे वेरी नॉन सेंडर की है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, लेट मी सी. लेकिन कभी कभी हम देखते हैं सेंडर है आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड, हम उस मेल को ओपन तक नहीं करते हैं, हम ओपन करके सीधा डिलीट कर देते हैं, पढ़ते भी नहीं है उनको, राइट. सो फर्स्ट इज यू कैन सेंडर. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर सेंडर्स, आप किसी को फर्स्ट टाइम मेल भेज रहे हो, डू यू नो दैट द पर्सन विल रीड इट और नॉट? हाउ विल यू नो? वो एक अलग ऑप्शन है जिसमें आप उसको डिलीवरी, एक ऑप्शन होता है मेल बॉक्सेस में जिसमें आप उसको सेट कर सकते हो कि रीड रिसिप्ट. अगर किसी ने आपका मेल रीड करा है नहीं करा, यू विल गेट टू नो वाया नोटिफिकेशन. वो एक अलग ऑप्शन है. बट आई एम टेलिंग यू, डू यू रियली वांट दैट आपकी मेल पढ़ी जाए, आपकी मेल का रिस्पॉन्स आना चाहिए? तो आप क्या करोगे ऐसा? आप किसी को फर्स्ट टाइम मेल भेज रहे हो, डू यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन शुड रीड योर मेल? फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे पर्सन को ईमेल भेज रहे हो, लेट्स से आप दिल्ली अथॉरिटीज को या फिर कोई हायर अथॉरिटीज को मेल भेज रहे हो, कोई कंप्लेंट कर रहे हो, और उनके पास लाखों करोड़ों ईमेल्स आती होंगी दिन की, राइट. हजारों तो आती ही होंगी. सो आपका ईमेल ही वो क्यों रिप्लाई करेंगे? उनके पास तो कितनी ईमेल्स आती है. सो ये बहुत बहुत मैटर करता है कि आपका सब्जेक्ट लाइन क्या है ईमेल का. मेरा भी सब्जेक्ट लाइन कॉमन है सबकी तरह. जो रीडर है जिसके पास मेल बॉक्स में ट्रिगर हुआ, कोई मेल आया है, वो भी यही सोचेगा कि कॉमन ईमेल है सबकी तरह. आपका सब्जेक्ट लाइन इतना कैची होना चाहिए, इतना इफेक्टिव होना चाहिए ना, जैसे ही वो मेल ट्रिगर करे, जैसे ही रीडर को पता चला कि कोई मेल आया है अननोन ईमेल से, द मोमेंट उसकी नजर पड़ी सब्जेक्ट लाइन, क्योंकि जब भी आप देखोगे मेल बॉक्स हमारा पॉपअप होता है, सब्जेक्ट लाइन में जरूर आता है हमारा मैसेज कि किस चीज है. वो उसको इतना कैची, इतना इफेक्टिव, इतना अटेंटिव होना चाहिए, वो तुरंत उस मेल का रिप्लाई करे, या रिप्लाई करे ना करे, उस मेल को जरूर ओपन करके देखे कि इसमें क्या है, राइट. सो दैट सब्जेक्ट, आपकी मेल के अंदर क्या लिखा हुआ है, कौन भेज रहा है, आपने थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखा नहीं लिखा, वो बात की मैटर करता है. पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है आपका सब्जेक्ट. बिकॉज अगर आपका सब्जेक्ट कैची नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, नो वन इज गोइंग टू रीड दैट ईमेल. इट विल बी इन ए स्पैम. ये स्पैम की तरह पड़ा रहेगा. आप चेजर डालते रहोगे, प्लीज रिप्लाई, नथिंग. सो मेक श्योर, अगर आप चाहते हो कि आपका ईमेल पढ़ा जाए, आपको रिप्लाई चाहिए या कुछ भी है, एटलीस्ट पढ़ा तो जाए, सो आपका सब्जेक्ट शुड बी वेरी कैची. If it is very urgent, very important, you may write the subject hyphen very urgent, yeah, important, urgent, right? And if you want that you have to get a response, requesting response, ऐसे भी कर सकते हो आप सब्जेक्ट में, requesting response, right? Immediate response required, ये भी कर सकते हो. Immediate response required का मतलब है तुरंत जवाब चाहिए, right? सो अगर या तो सिंपल सब्जेक्ट लिखोगे, कोई नो वन विल बॉदर इट कि आया होगा कहीं से भी. सो दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट शुड बी वेरी कैची. इफ यू नीड एनी हेल्प, एनी टिप्स कि अगर आप कोई ईमेल लिख रहे हो उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सर्टेनली यू कैन कमेंट मी, आई विल हेल्प यू कि क्या इसका सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए. ओके गाइस, सो मूविंग फॉरवर्ड, I hope so far so good. We are going good, not too with pace, not too slow, right? We have to maintain a pace. Now subject हो गया और spell check हो गया, and we have read our email. Now hi hello हो गया. अब hi hello के बाद start कैसे करें email, right? How to start email? Hi ईशांत कोमा, उसके बाद नीचे से मेल कैसे स्टार्ट करें? सीधा लिख दे कि दिस इज अ प्रॉब्लम, आई एम राइटिंग टू यू. नो. सो इररिस्पेक्टिव, आप किसी को भी ईमेल भेज रहे हो, किसी को भी, फॉर्मल ईमेल है, इनफॉर्मल ईमेल है, बॉस को है, टीचर को है, एनीवन,
write your email. I have written, if you see on the top three, I have written three things. You start with trust you are well. Second is, I hope this email finds you in good health, or you may write in good spirit, या फिर this email finds you in, this email finds you well, or hope you are doing well, right? So you can certainly write any of these three, but I personally prefer you can certainly write this one, trust you are well, right? या फिर आप hope you are doing भी good भी लिख सकते हो, but ये थोड़ा सा मतलब रेगुलर किसी के साथ बात कर रहे हो उसके लिए, बट फर्स्ट टाइम आप किसी को लिख रहे हो, ट्रस्ट यू आर वेल इज अ वेरी गुड टेक्निक. ट्रस्ट यू आर वेल, ट्रस्ट यू आर वेल का मतलब कि आई ट्रस्ट और मैं आई बिलीव दैट एवरीथिंग इज ओके एट योर साइड. सेकेंड भी सही है, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ और गुड स्पिरिट्स और वेल, बट वो थोड़ा सा लेंथी है इसलिए, बट तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट we start with our meals with these sort of things. You know why? Because it seems that इसमें caring aspect है, right? Humane है, because we all are human beings, guys. We are communicating with each other. To trust you well, it's a sign of that you are educated, right? So it should be written in our emails. Very, very important. You may not be writing it, or you may be writing it, but I would recommend you should write it. Start writing this when you start your email. But अगर आप किसी से रोज कम्युनिकेट कर रहे हो, मैंने आज मेल भेजा फिर शाम को मेल भेजा, ये नहीं कि आप हर ईमेल पे भेजोगे. मैंने अभी फर्स्ट ईमेल पे होना चाहिए, फर्स्ट ईमेल पे, राइट? से आज लेट्स से फॉर एग्जांपल मंडे है, मैं फर्स्ट ईमेल किसी को भेज रहा हूँ, आई विल राइट ट्रस्ट यू आर वेल, होप यू हैड अ नाइस वीकेंड, होप यू हैड अ गुड वीकेंड, होप एवरीथिंग इज गुड एट होम, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट यू आर वेल. ठीक है, अब उस पर्सन का रिप्लाई आ गया, फिर मैं उसको रिप्लाई कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं फिर भी लिखूंगा उसको ट्रस्ट यू आर वेल. नो नो नो, डू नॉट कीप इट इन द चेन ईमेल. फर्स्ट टाइम यू आर राइटिंग, दैट्स फाइन. उसके बाद आपको कल भी मेल लिखना है, तब भी लिखने की जरूरत नहीं है. व्हेन देयर इज अ गैप ऑफ अ वीक और 2 days 3 days, तब ठीक है. ये नहीं कि सुबह से शाम तक मैं उसको 10 मेल भेज चुका हूँ और 10 पे 10 मैं ट्रस्ट यू आर वेल लिख रहा हूँ. नो नो, दैट वो तो फिर हो जाएगा कॉपी पेस्ट किया हुआ मैटर है. नो, डोंट राइट इट. सो फर्स्ट टाइम यू आर राइटिंग, जस्ट राइट ट्रस्ट यू आर वेल, दैट्स इट. एंड व्हेन यू नो दैट, उसके बाद शाम को भी आपको मेल भेजना है, फिर लिखने की जरूरत नहीं है. कल भी भेजना है नहीं, 2-3 दिन का गैप हो जाए, एक हफ्ते का गैप हो जाए, या फर्स्ट टाइम भेज रहे हो, आफ्टर ए मंथ भेज रहे हो, देन दीज थिंग्स वी नीड टू राइट. इट्स स्टार्टिंग ईमेल में लिखना है आप, राइट? सो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हेन वी हैव टू स्टार्ट आवर ईमेल. अब स्टार्ट तो कर लिया हमने, पूछ लिया भैया तुम कैसे हो, सब ठीक है तुम्हारे वहां. अब मेल नेक्स्ट लाइन से, फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन से, या एक लाइन छोड़ के, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, उसके बाद आपको अपना मेन कंटेंट लिखना है मेल का. अब मैसेज की बात हो रही है यहाँ पर, राइट? मेन मैसेज जो आप बताना चाह रहे हो, जिसके लिए आपने ईमेल लिखा है, राइट? उसका हालचाल पूछने के लिए तो मेल नहीं लिखा कि ट्रस्ट यू आर वेल कैसे हो, राइट? यू आर राइटिंग एन ईमेल फॉर सम पर्पस. नाउ हियर यू गो, यहाँ पर आपका पर्पस स्टार्ट होता है. अब पर्पस क्या है? So I have written 4 things here. First says this is in regards to. This is in regards to मतलब ये इस बारे में है, जिस बारे में आप बताना चाहते हो, ये भी लिख सकते हो. या आप लिख सकते हो this is to inform you. ये कोई चीज आपको इन्फॉर्म करनी है, this is to inform you. This is to apprise you. Apprise you also means कि inform, मैं किसी को कोई चीज apprise कर रहा हूँ, right? This is to apprise you. This is to bring into your notice, या this is to bring into your attention, this is to bring into your kind attention. मैं आपकी नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ ये बात, ये भी आप लिख सकते हो. ओके, सो दिस इज इन रिगार्ड्स टू, ये इस बारे में है. दिस इज टू इन्फॉर्म यू, दिस इज टू अप्राइज यू, दिस टू ब्रिंग इनटू योर अटेंशन, आपकी अटेंशन के लिए, इमीडिएट अटेंशन. दिस इज टू ब्रिंग इनटू इमीडिएट अटेंशन, ये भी लिख सकते हो अगर आपको चाहते हो इमीडिएट अटेंशन. So whatever you feel good, आप एक लाइन इसमें से याद कर लो, या as per situation you think ये will fit to that particular purpose, you can certainly do it. So यहाँ से हमारी email start हो जाती है basically, यहाँ से purpose start हो जाता है. The message is started now. What you want to write, right? Okay, so purpose start हो गया. अब आपने mail अपनी draft कर ली है, पूरी मेल ड्राफ्ट कर दी, आप जो बताना चाह रहे हो. लेट्स से दिस इज टू इन्फॉर्म यू as this has happened, blah 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 blah.
जो भी आपके मैसेज है, this is to bring into your kind attention, we are not happy with the services, this is to bring it to immediate attention that the water supply has been stopped in our locality, right? कुछ भी, जो भी आप मैसेज देना चाहते हो, तो यहाँ आपका मेल ड्राफ्ट हो गया, ड्राफ्ट हो गया, अब रेडी हो गया आपका मेल, राइट? जो मैसेज देना चाहते हो, डन. Now you're done with the message. Now coming to the next part, you can see on my screen closing. Of course, if you are starting something, you have to close it in a good manner. ये नहीं कि मैसेज खत्म कर दिया बस, आपकी क्लोजिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. Closing. Now closing, what is closing? Closing is what are your expectations? What do you want? क्या होना चाहिए उसका एक्शन? मैंने अपनी प्रॉब्लम बता दी, मेल ड्राफ्ट कर दी कि दिस इज माय प्रॉब्लम, या मुझे किसी को फीडबैक देना है. क्लोजिंग मींस व्हाट यू वांट एट द एंड, राइट? सो आई हैव रिटन 7 liners in a closing. First says, looking forward for your response. If you need a response in a very simple manner, I am looking forward for your response, मतलब मुझे आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा. सेकेंड है, प्लीज रिप्लाई एट द अर्लीस्ट, मतलब जल्दी से जल्दी प्लीज रिप्लाई कीजिए मेरी मेल का. थर्ड कहता है एंटिसिपेटिंग द रिस्पॉन्स. सो एंटिसिपेटिंग द रिस्पॉन्स का मतलब होता है एंटिसिपेट करना, कोई चीज प्रिडिक्ट करना. क्या आई एम एंटिसिपेटिंग कि कल बारिश होगी, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, राइट? सो आई एम ऑल्सो एंटिसिपेटिंग दैट यू आर गोइंग टू रिप्लाई मी. आई एम एंटिसिपेटिंग ए रिस्पॉन्स, आई एम प्रिडिक्टिंग ए रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, राइट? वुड अप्रिशिएट द रिस्पॉन्स. आई वुड अप्रिशिएट अगर आप इस मेल को रिप्लाई करते हो. लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू, राइट? ऊपर था लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स, यहाँ पर है लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू. वुड रिक्वेस्ट फॉर योर रिस्पॉन्स, बहुत पोलाइटली बोल दिया मैंने. वुड रिक्वेस्ट फॉर योर रिस्पॉन्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके जवाब का. प्लीज इफ यू कुड रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी और माई आस्क, और प्लीज इफ यू कुड रिस्पॉन्ड टू द आस्क, और प्लीज इफ यू कुड रिस्पॉन्ड टू माई क्वेरी. सो हर एक अलग अलग है. नाउ डिपेंड वेयर यू आर, आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किस प्लेटफॉर्म पे है, वहां क्या ज्यादा सूट करता है. फॉर एग्जाम्पल, looking forward for your response could be straightforward, right? Please reply at the earliest, थोड़ा सा polite है. Anticipating the response थोड़ा polite नहीं है, but आपको लगता है आपने कोई complaint करी है किसी डिपार्टमेंट को and you are looking for a response. Would appreciate the response is a simple way you can use anywhere. Looking forward to hear from you, जब आप कोई response expect कर रहे हैं normal way में. Would request for response. अब would request, यहाँ आप request कर रहे हो, इसका मतलब आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हो जहां पर आप अपने बॉस को मेल कर रहे हो एंड यू वांट दैट योर बॉस शुड रिप्लाई. फॉर एग्जांपल, यू आर राइटिंग फॉर योर सैलरी हाइक कि बॉस मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल हो गए काम करते करते, मेरा सैलरी अच्छा नहीं है. यू आर राइटिंग एन ईमेल, सो हियर यू आर रिक्वेस्टिंग. यू कैन नॉट राइट टू ए बॉस लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स. यू कैन राइट, बट थोड़ा सा वो इनफॉर्मल लगेगा. एंटिसिपेटिंग द रिस्पॉन्स ये नहीं लिख सकते तब बॉस को. तब आप यही चूज करोगे, वुड रिक्वेस्ट. आप वुड रिक्वेस्ट फॉर रिस्पॉन्स बिकॉज यू आर राइटिंग टू योर बॉस और टू द हायर अथॉरिटीज. मैटर आपकी सैलरी का है, राइट? प्लीज इफ यू कुड रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी, राइट? एज पर सिचुएशन, आपको जो सिचुएशन में जो ठीक लगे वो आप लिख सकते हो. जहां पर रिक्वेस्ट की बात होती है वो थोड़ा सा और ज्यादा पोलाइट हो जाता है. यू आर पोलाइटली आस्किंग, राइट? क्योंकि आपको लगता है अगर आप पोलाइट नहीं लिखोगे, दे माइट आस्क यू कि आपने ईमेल कैसे लिख दिया. बट कई जगह पर हमें पोलाइट होने की जरूरत नहीं है. एंटिसिपेटिंग और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स ऐसे करके, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, नॉर्मली आप किसी को मेल करके लिख सकते हो. सो दैट वाज द क्लोजिंग पार्ट, राइट? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि हमने मेल 2 में किसको रखना चाहिए, सीसी में किसको रखना चाहिए. फिर हमने पढ़ा सब्जेक्ट लाइन कैसा होना चाहिए. फिर हमने पढ़ा कि मेल का स्टार्टिंग कैसा होना चाहिए, राइट? हाउ वी ग्रीट, trust you are well, hope you are well, and afterwards we read about mail start कैसे करना चाहिए. this is to apprise, this is to inform. और उसके बाद लास्ट पार्ट है क्लोजिंग, कि हमें हम क्लोजिंग कैसे करना चाहिए. क्लोजिंग तक समझ आ गया. अब नेक्स्ट पार्ट है सिग्नेचर. आपकी मेल आपने लिख ली है, सब कुछ हो गया है, राइट? यू sat on your system, मेल लिख दी. लास्ट पार्ट, जब आपने इतनी अच्छी मेल लिखी दी है सब कुछ, so why are you know dripping the last part? Make sure your last part should also good. So now here some people say many thanks, some says regards,
Some says best wishes, some says thanks and regards, some says yours faithfully, yours obediently. So basically yours faithfully and yours obediently usually letters में होता है, जो हम schools में लिखते हैं, yours sincerely, yours faithfully, yours obediently. So emails में basically नहीं होता है, but I kept it if anyone wants to write a letter उनके लिए. But usually I personally follow regards. That's it. I do not write thanks and regards. You may write thanks and regards, that also good, but that is an outdated pattern. These days either people say many thanks या regards या best wishes भी है, वो भी आप लिख सकते हो, but आप उसको simple regards भी लिख सकते हो, right? Only regards. So that's a closing part of the email, right? So that was all about the email part which we just did. So I'll just do a quick recap. So we did what was our word of the day, inquisitive, and then we studied about how to proofread our emails, how to do a spell check, and then we did difference in 2 and CC, and then how to start the salutation. इसको salutation बोलते हैं. And then email का content पे क्या-क्या चीजें हमें focus करनी चाहिए, and कैसे हमें start करना चाहिए, and then the closing and signature part. Now I would give an example of an email. Let me think. कोई भी एक email का example I will draft right away. Basically not draft in the sense I will reiterate an email. Let's say I'm just thinking a topic. What should okay. For example, I am writing an email to my supervisor. I work in an organization and I'm writing an email to my supervisor that I require holidays, 1 week off, right? I require 1 week off because I'm traveling to abroad, or maybe I'm traveling outstation. That's it. How would I write? So I will keep my boss supervisor in two, जो भी email ID रहेगा मेरे supervisor का. CC में मैं अपने boss के boss को रख सकता हूँ, just for information कि उनका एक staff छुट्टियों में जा रहा है. Subject रहेगा request for leaves, right? Request for leaves. Request for leaves उनके तुरंत boss देखेगा email, और कोई मेल का भले ही रिप्लाई नहीं करे, उसको पता है कि यार छुट्टी के लिए कौन छुट्टी मांग रहा है, right? So request for leaves, it's very catchy. Then I write hi. Maybe for example, my boss name is Robert. Hi Robert, comma, trust you are well, full stop. This is to apprise that next week I will require 5 days leave with effect from, आप डेट डालोगे 11th May to 15th May, right? Full stop. As I'm planning for I'm visiting to a hill station, or maybe I'm going out of station with my family, hence looking forward for leaves for a week. Full stop. Next line में would request if you can please approve my leaves, anticipating your response, yeah, anticipating the support. Full stop. Thanks and regards, yeah, regards Ishant. That's it. It's a very simple email. I did not make it very complicated कि ये है वो है मैंने कभी छुट्टी नहीं ली, blah blah. Simple email. That's it, right? Let's do one more example, then we wrap up. Before we wrap, ये तो हो गया organization का. Let's say you are using a telephone. आप कोई postpaid service use कर रहे हो. Maybe take any example, any operator, right? कोई भी हो, Aircel का example ले लेते हैं. Aircel, it doesn't exist in as of now, but still take an example of Aircel, not Airtel. आपको bill आ गया 10,000 का. You call up the customer service. They said, so write an email to our complaint department. They will look forward. So 2 में you will ask the email ID. And now वो email किसको जा रहा है? You don't know the person, right? CC में
you will ask, is there any other department to whom you can escalate this? वो कहेंगे कि level 1, level 2 and level 3. So आप level 1 को लिखोगे, level 2 को अभी सीसी रखोगे, लेवल 3 में को नहीं रखोगे, क्योंकि लेवल 3 को तब रखोगे जब लेवल 1 भी और लेवल 2 दोनों हेल्प नहीं कर पा रहे. सो लेवल 2 को सीसी रखोगे कि उनको पता होना चाहिए. सब्जेक्ट में आएगा हाइक इन बिल अमाउंट, हाइक इन बिल अमाउंट, रिक्वेस्टिंग फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट रेजोल्यूशन, राइट. हाई टीम, comma, this is to advise that I am one of your subscriber. ब्रैकेट में आप अपना नंबर डालेंगे, right? I'm one of your subscriber, right? I have got a bill. I have got a hefty amount of, hefty means high, hefty amount of bill, which is, that is I dot E dot 10,000, right? Right. Full stop. Next line से आप लिखोगे, the bill amount which is of 10,000, literally quite surprising for me, because I did not expect that much of bill. I am your subscriber from the last 2.5 years, जितने time से भी आप ये services use कर रहे हो, 2.5 years, and the maximum amount of bill which I have received is of 1,000. So this is quite surprising and shocking for me, as I am using this services from the last 2 to 3 years, right? Would appreciate if you can look into the matter on priority and respond me with the resolution. Full stop, right? And next line में आप लिखोगे, anticipating the immediate response for a quick resolution. Regards, your name. That's it, right? So we discussed 2 emails. दोनों का पैटर्न अलग था, दोनों की टोन अलग थी, दोनों का सब्जेक्ट अलग था. So it depends आप किसको ईमेल लिख रहे हो, कैसी ईमेल लिख रहे हो, और अकॉर्डिंगली आपका पैटर्न चेंज हो जाता है, टोन भी, राइट. फॉर एग्जांपल हम किसी से बात करते हैं, जैसे हमारा वॉइस टोन चेंज हो जाता है, सिमिलरली ईमेल्स में मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने बॉस से बात कर रहा हूँ, थोड़ा हम्बल होकर बात करूंगा. बट अगर यही बात मैं फोन पे कर रहा हूँ कि मेरा बिल ज्यादा कैसे आ गया, तब तो मैं पोलाइटली बात नहीं करूंगा ना, रिक्वेस्ट करके, तो मेरा टोन थोड़ा चेंज हो जाएगा. सिमिलरली वैसे ही हमारा ईमेल्स पे भी होता है. We need to keep these tips in mind, and if we are literally following these tips effectively, I can literally vouch on that there will be no issues, right? बाकी if in case if there are anything you want to ask, for example आपको कोई email लिखने, आपको समझ नहीं आ रहा कि सर मैं email लिखना चाह रहा हूँ, don't call me sir, Ishant, I'm writing, I want to write this email, but I'm not able to understand, so how should I do? You can certainly comment me, I will personally reply to you, and I will certainly help you, right? Because email writing is a skill, and I want you should develop that skill, and I know that some of you are already will be good in that, right? So guys, that was about email writing. I hope and I expect that you would have loved this session, and this was in one of the interesting session. So just to tell you one more thing, tomorrow is Saturday, it's a weekend, right? So I think that we will do something exciting on the weekend. So tomorrow I will be picking a very exciting topic for you all, and like yesterday I revealed the subject, but today I will not reveal the subject. Tomorrow you will see a very different subject. Today it was email writing, tomorrow it will be very interesting subject which will certainly help you and nourish you. So here I take a bet, and thank you so much for all of you. Thank you for listening to me. I wish you a very good evening and take care. Bye-bye.